वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज गौरव यान यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोगों ने टॉपिक ये ढूंढा है कि हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं कि जैसे ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खत्म हुआ है, बहुत लोग ये बातें कर रहे हैं कि चतेश्वर पुजारा को टीम से निकाल देना चाहिए। उनका स्ट्राइक रेट काफी लो है, बहुत दिन से वो रन नहीं बना रहे हैं, तो उनको टीम से निकाल देना चाहिए। उसी पे आज हमारा डिस्कशन है। और अभी कुछ देर के बाद हमारे गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे, तो उनको भी ऐड करेंगे और डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ देर तब तक मैं ही इस डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि आपको कि क्या ये सही है, क्योंकि अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले, क्योंकि बहुत लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, तो सिर्फ चेतेश्वर पुजारा पे उंगली उठाना ये बिल्कुल बहुत गलत बात है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ऑस्ट्रेलियन दोस्त। आई थिंक उनसे भी बातें करेंगे, उनसे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। लूकस हैज जॉइंड अस। लूकस, वेलकम बैक टू माय शो, मेट। Thank you very much. Pleasure to be here. So basically, you know the topic of today, right? Absolutely, Pujara. Absolutely. Yeah, because everybody in India is questioning about Pujara's place. Okay, so is it fair? Is it fair to only discuss about Pujara's place? Because I think not many batsmen has contributed for a very long period of time. Whether you are talking about Pujara, whether you are talking about Rahane, whether you are talking about Virat Kohli. So is it fair to only question about Pujara, and why Pujara every time? It's not fair just to put the blame on him, but it is fair to actually talk about him. He hasn't made a Test match hundred since 2019, and so he's horribly out of form. But to put the blame on one person is very harsh. When you've got Virat, Kohli, and Rahane who haven't made runs, since that time as well. You just can't blame one person. You can't put the blame all on one person. It is a team sport at the end of the day. And you have to share the blame. And unfortunately, Pujara, as I said, has not made runs recently. But there are other batsmen who have not made runs either. So it is not fair just to put the whole blame on Pujara, but he should get some of the blame. Exactly, but I think you're talking about the hundred. So Virat Kohli last hundred was in India. I think India Bangladesh series, that was a pink ball test match. He Yeah. has scored last hundred there, and I think Rahane also scored 100 in Australia. But the main problem with Ajinkya Rahane is consistency. Okay, so I think so everybody is responsible for the Indian team World Test Championship failure. I think you can't blame only Cheteshwar Pujara, right? No, you just cannot blame it on one person. And what happened in the World Test Championship. Bumrah. He's also at fault. He had a poor Test match. He got smashed all over the park. Not just in the first innings, but the second innings as well. So you have to take that into consideration as well. At the end of the day, there were numerous players that did not step up in that Test match. Pujara was one of them. Kohli was one of them. Rahane was one of them. And Bumrah was one of them from the bowling perspective, and Jadeja. So it's unfair to put the whole blame on Pujara. That's not fair. He deserves a little bit more respect than that. But as I said, he deserves some of the blame because he was to blame part of that. But just don't put it on one person. ओके लुकस, आई विल गेट बैक टू यू। यक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे शो पे आए बहुत दिनों के बाद। आपको पता है अभी या I think someone in the comments said. I think someone in the comments said hello to me, so I'll just say hello to them who said that. So hello, thank you. Amar has said hi to you, Lucas. Hello, Amar, thank you. ओके, मूविंग ऑन टू यक्षित जी। यक्षित जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक आप भी सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं। ठीक है, बहुत दिनों से ये खबर चल रही है कि मिडिल ऑर्डर को अब चेंज किया जाए। मिडिल ऑर्डर में सबसे पहला बार एज एक्सपेक्टेड चतेश्वर पुजारा पे ही लोगों ने सवाल उठाना स्टार्ट किया है, तो क्या ये सही है? Actually, if you talk about last 2 years, Pujara has played a very key role in bringing
India to the WTC finals. Key role means he has given his main good contribution. Even during the Australia tour, he had scored good runs from the one end, so that other batsmen can play freely. Okay, it is because of Pujara only we could draw the third match, because he gave the confidence to that we are not losing. It was Pujara only who gave Rishabh Pant confidence to hit. So I think so. His contribution is a major one. Also, we can't say that totally it is a it was Pujara's fault, because team consists of 11 players. But as Pujara, Ajinkya Rahane, and Shubman Gill are purely wide ball cricketers, these people should take more responsibility. No, I don't, जी, मेरे ख्याल से पुजारा वाइड बॉल क्रिकेटर नहीं है, वो सिर्फ रेड बॉल में ही खेलते हैं. Red ball, that's what I'm saying. As Pujara, Rahane, and Shubman Gill are red ball cricketers, they should take more responsibility as compared to the other people. Okay, they have the major responsibility, but we can't totally blame him. And people are just trolling him to keep him out of the team. He must, team management must give him the advice how should he should play. He must be given another chance in the England tour, and then we can reconsider our decision whether we should keep him, because another thing is his age is at higher side as compared to other players. We should also look upon keeping a मेरे ख्याल backup. से अगर चेतेश्वर पुजारा की एज की बात कर रहे हैं ना, तो इन दोनों की इन तीनों की एज अगर बात करें, मेरे ख्याल से रहाणे, विराट कोहली और पुजारा, ये लोग सेम एज के, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है, तो सिर्फ पुजारा पे क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है. मेरे ख्याल से अगर आपको याद होगा तो 2000 आई थिंक जब हम इंग्लैंड टूर पे गए थे 2016, 17, 18 ऐसे कुछ है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, 2018 था आई थिंक. तो वहां पर भी पहले टेस्ट के लिए उनको ड्रॉप किया गया था, बोल के ये कि उनको स्ट्राइक रेट उनका ठीक नहीं है. ठीक है, तो हर बार से पुजारा क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से विराट कोहली भी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं उतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. अजिंक्य रहाणे भी कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा मसला है. लोग मुझसे ये बोलते हैं, बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि अजिंक्य रहाणे बहुत दिन से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया के लिए लीडिंग रन स्कोरर है. आई टोटली एग्री, पर उनका एवरेज आपको पता है कितना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में? 2 साल का सर्कल था और 1000 रन बनाया उन्होंने 40 के एवरेज से. तो 2 साल में 1000 रन हमारे लिए बहुत है और 40 का एवरेज भी बहुत है हमारे लिए. पर ये नहीं जानते कि कंसिस्टेंसी उनसे बहुत बड़ा मसला है. नंबर 5 में बैटिंग करते हुए उनका एवरेज अभी भी 40s में है, बल्कि अगर उनका आप देखेंगे ओवरसीज का परफॉर्मेंस निकाल दे तो वो टीम में रह भी नहीं सकते, क्योंकि उनका इंडिया में ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल टेरिबल है. यक्षित जी, और रिक्वेस्ट है थोड़ा सा हिंदी में बोले, क्योंकि हिंदी ऑडियंस भी देखना चाहिए, क्योंकि लुकस तो वैसे ही इंग्लिश में बोलेंगे, तो आप थोड़ा हिंदी में बोल लें. हिंदी में बोलो, ठीक है. तो मैं एक्चुअली आपने एक बात तो सही कहा कि अजिंक्य रहाणे एंड बोथ अजिंक्य रहाणे एंड चेतेश्वर पुजारा आर एट पार. तो उसमें मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो आप एक प्लेयर को बाहर कर रहे हो, एक प्लेयर को अंदर कर रहे हो. दूसरी बात ये है कि अजिंक्य रहाणे एक्चुअली थोड़ा वाइस कैप्टन जो है ना, तो वो फैक्टर उनको फेवर करती है एज कम्पेयर टू पुजारा. ठीक है, तो पहले अगर किसी का नंबर लगेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ लगना चाहिए, मेरा व्यू है कि पुजारा को और चांस मिलना चाहिए, बट बाई चांस अगर पहला किसी का ये दोनों में से नंबर लगेगा, वो तो पुजारा का लगेगा, बिकॉज अजिंक्य रहाणे इज योर वाइस कैप्टन. ओके, एंड सेकेंड थिंग, अजिंक्य रहाणे ने अभी अपने को एक सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे बात बताइए. आपने एक और पॉइंट बोला कि इंडिया में जो रिकॉर्ड है अजिंक्य रहाणे का पुअर है एज कम्पेयर टू पुजारा. आई टोटली एग्री विद यू, बट when it comes to play as per situation, tell me Gaurav. मैं पूरा सिर्फ पुजारा से नहीं, बहुत लोगों से उनका रिकॉर्ड खराब है इंडिया में. राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि पुजारा अभी कैसा है कि रोहित शर्मा को तो आप ये नहीं कर सकते. आप पूरा टीम देखिए, वो प्रॉब्लम आता है कि किसी को तो निकालना है तो बाकी लोग को नहीं निकाल सकते. उसको मैं 5 जन का रीजन देता हूँ, तो छठे पुजारा बचते. शुभमन गिल यंग है, अगर उनको निकाला तो भी मयंक अग्रवाल को चांस मिलेगा. उसके बाद रोहित शर्मा को तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए. पुजारा के बारे में हम बाद में बात करेंगे. विराट कोहली तो कैप्टन है, वो नहीं जा सकते. अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन है, भले उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है फिलहाल के लिए तो नहीं जा सकते, उनका नंबर बाद में लगेगा. ऋषभ पंत को तो आप यही नहीं सकते. फिर आपका बचा कौन? समझ गए ना, टारगेट करना ही है तो फर्स्ट टारगेट पुजारा ही. एक शुभमन गिल हो गए और एक पुजारा हो गए, बट शुभमन गिल गए तो फिर भी in his place
Mayank Agarwal will come. So that is why अगर टारगेट है तो पहले पुजारा है. मेरा पर्सनल व्यू नहीं करना चाहिए, बट लोग इसी के लिए टारगेट कर रहे हैं बिकॉज बाकी के 5 ऑप्शन जो है वो उनके पास अवेलेबल नहीं है टारगेट करने के लिए. मेरा आंसर ये है गौरव जी. रुपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे शो पे. आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी मेरे ख्याल से बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं. पुजारा पे बहुत लोग टारगेट कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्योंकि मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर अगर देखा जाए, वेदर इट इज चतेश्वर पुजारा, वेदर इट इज विराट कोहली और वेदर इट इज अजिंक्य रहाणे, दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल टू देयर स्टैंडर्ड. तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि सिर्फ पुजारा को टारगेट करना सही बात है या नहीं? नो, बेसिकली सिर्फ सिंगल पर्सन की अगर यहाँ पे बात हो रही तो मैं डिसएग्री करूंगा, क्योंकि आपकी पूरा होल मिडिल ऑर्डर यहाँ पे स्ट्रगल कर गया. सिर्फ यानी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल ही नहीं, उसके अलावा आप काफी इसके बाद भी जो भी सीरीज हुई थी उसमें काफी आपका चाहे विराट कोहली हो, चेतेश्वर पुजारा हो, अजिंक्य रहाणे हो, इन ये सभी परफॉर्म नहीं कर पाए. तो सिर्फ सिंगल पुजारा के ऊपर यहाँ पे नाम उठ रहा है, जो कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ. काफी बड़े दिग्गजों ने भी उनके ऊपर बात की कि शायद पुजारा का भी ड्रॉप कर देना चाहिए, समथिंग लाइक दैट. तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ सिंगल पुजारा के ऊपर बात होनी चाहिए. अब बात होनी चाहिए तो फिर आपके कैप्टन के ऊपर भी बात आ सकती है, क्योंकि भाई आप भी परफॉर्म नहीं कर रहे, उसी के साथ साथ आपके वाइस कैप्टन जो अजिंक्य रहाणे, इनके ऊपर भी बात होती है कि भाई आप भी यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे. लेकिन बात यह है कि पुजारा का शायद फॉर्म काफी डिक्लाइन हो चुका है, क्योंकि जो वैसी पारी नहीं खेल पा रहे, क्योंकि जो पिछले आप दो साल पहले जो खेलते थे, जो पुजारा के टीम के एक मेन प्लेयर होते थे कि वो भाई लाइक बैकबोन ऑफ द टीम ऑफ टेस्ट क्रिकेट इंडिया की, जो बैटिंग संभालते थे, लाइक वैसे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे. दैट्स व्हाई द रीजन की पुजारे के ऊपर, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि सिंगल फॉर्मेट खेलते हैं तो उस वजह से उनसे एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ गई है इंडिया की और इंडियन टीम की भी. तो इस वजह से उनका नाम सबसे पहले आ रहा है कि भाई आप पुजारा को निकाल दे. ठीक है, आई एक्सेप्ट, पुजारा को निकाल दीजिए, उसकी जगह आप कौन रिप्लेस कर पाएंगे, क्योंकि उनके जैसा खेलने वाला प्लेयर नहीं है आपके पास. एग्जैक्टली राइट. तो आपके पास ऑप्शन नहीं है. हाँ, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं. यहाँ पे बात भी अजिंक्य रहाणे की बात हो सकती है. Like Ajinkya Rahane didn't perform in last few series. He just only performed in one match, like in Australia in 2021 series, right? So बात, क्योंकि इनकंसिस्टेंट काफी प्रॉब्लम रहा है अजिंक्य रहाणे का, तो वहां पे उनकी बात हो सकती है कि भाई अजिंक्य रहाणे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो शायद उनको रेस्ट दीजिए या उनको डोमेस्टिक खिला लीजिए भाई, फिर आप बैकअप कर सकते हैं. क्योंकि आपके पास जो लाइक 4-5 नंबर की जो 5 नंबर पे आते हैं अजिंक्य रहाणे, तो वहां पे आप काफी सारे बैट्समैन आपके बेंच पे बैठे हैं, लाइक केएल राहुल को भी ट्राई कर सकते हैं, उसके साथ काफी और अच्छे बैट्समैन है जो आप वहां पे ट्राई कर सकते हैं. लेकिन आप नंबर 3 के लिए छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए मुझे, तो मेरे हिसाब से फिलहाल तो भी. ओके, शोभन हैज जॉइंड अस. शोभन, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे शो पे आए. आप ये बताइए कि जो सवाल उठ रहा है चेतेश्वर पुजारा को लेकर, उनके प्लेस को लेकर, क्या वो सही है? क्यों पुजारा को ही सिर्फ टारगेट करना चाहिए? क्योंकि मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर जो बैट्समैन है, हमारा कोई भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उतना क्लिक नहीं कर रहा बहुत दिनों से. ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 सीरीज की बात है या फिर एक मैच की बात है, बहुत दिनों से हमारा मिडिल ऑर्डर आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है. तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या ये सही है, सिर्फ पुजारा को ही पॉइंट आउट करना चाहिए? शोभन, या आई विल हिंदी या इंग्लिश? आप हिंदी में बोल सकते हैं. या Lucas is there, so I will speak in English, right? नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लुकस सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे, बाकी लोग हिंदी. हिंदी बहुत लोग सुनना चाहते हैं. Okay, I'm talking in English because Lucas can also understand. I think Pujara's case is very curious. I believe Pujara is a rock solid player, even though he failed against New Zealand in that one-off test match in the WTC final. I still believe he's the next, he's the new wall of Indian cricket. So talking about his strike rate, talking about his running between the wickets, I think it's overrated. Cricket is a simple game, even though you bat well, but we have seen some players we have seen Injama Mulak, we have seen Lucas must have heard of this player, I guess his name was Cosgrove. He actually played. He's playing in the county cricket. He was also a great striker for Australia in the domestic cricket, as he was also having a lot of weight. So I believe Mark Cosgrove, Mark Cosgrove, yeah. So talking about Pujara's technique or Pujara's batting position, I believe there's no replacement. If we have some replacement, then we can bring up this issue of strike rate or running between the wickets. I believe if you have bench strength, then apply, or else you have to stick with Pujara.
for goodness sake, because he is he is one of those traditional batsmen who can hold and one end up. And you can ask Lucas as well. Once, like in that documentary, there was a famous documentary launched in India of England versus Australia. I guess India versus Two Nations, One Obsession, the name of the series. Yes. And they, and they Amazon said, Prime series, right? yeah. And Patrick Cummins and Josh Hazelwood, they constantly said he was batting. We couldn't dislodge him. And somebody, if you pick who can bat for life, then it will be Pujara. So a lot of things are going against him currently, but once he comes at number 3, if he scores those tough runs against England, I think he will shut everybody's mouth. Okay, moving on to Lucas. Lucas, Exactly what's my your take? point. Lucas, what's your point on this? Because my question is this: that everybody is saying that nobody's questioning Virat Kohli and Ajinkya Rahane because they are the captain and other one is the vice captain. So is this right? Because if you take my point of view, Virat has to lead from the front because he's the captain also and he's the main batsman of our team. And same goes with Ajinkya Rahane. So why this is happening again and again, that everybody is still questioning about Pujara's place? Go ahead with that. One of the reasons why people can seem to question about Pujara is probably because the way he goes about it. You know, he takes his time. You know, in Australia, we had a batsman called Ed Cowan who similarly played like Pujara. You know, his strike rate was very poor. And he would get out, you know, make 30 off 130 balls, then get out, and you get a lot of hate for it. But, you know, like you said, that Pujara's been playing that for years. He's been playing that since day one. This is nothing new for Pujara. You know, he just hasn't woke up and decided, you know, well, I'm just going to play like this way, the hell with any other style. He's been like this since day one. You know, while Rahul Dravid's retired, you know, he was the same batsman. And, you know, Pujara has taken over. And as far as I'm concerned, Pujara is not done. He's not finished. He's far from finished. You know, he has, you know, more great Test cricket ahead of him. He doesn't play any other format, so he can just focus on one format. You know, he's far from done. And you know, in Australia, you know, when you're the captain, you get criticised. You know, Tim Payne in the against India, he got criticised, you know, for the way he used his bowlers against India in Brisbane. So, you know, blaming, you know, Pujara, you know, that's just scapegoat. You know, that's just too easy of a target to pick on. You know, because nobody in India wants to have the guts to say, you know what, Kohli, Rahane, I'm sorry, but you're the part of the reason why they lost. Exactly. You had poor first innings, you had poor second innings, and you know, and to take no responsibility of it, you know, is pretty poor leadership. You know, Kohli and Rahane should be saying, you know, don't blame it on Pujara. You know, blame it on us. Blame it on me. You know, I'm the leader. Blame it on me. You know, and you know, he needs to step up. You know, in these press conferences and say that. You know. Now, as far as Pujara's form goes, you know, Sobham is right. You know, he's 100 away from shutting up everybody. You know, he can. You know, he wasn't terrible in Australia. You know, he made that very good innings in Brisbane, where he held down the fort. You know, when Richard Pant, you know, attacked and Shubman Gill attacked. You know, it wasn't like he made like 5 ducks. You know, he was still pretty good. And, you know, and like Sobham said, he is 100 away from shutting up everybody, and will be all forgotten. But I'd like to see Virat Kohli and Rahane take a little bit of responsibility off these players. Okay, thank you, Lucas. Moving on to यक्षित जी. यक्षित जी, आप जैसा कि मेरा सवाल था पहले भी, क्या ये सही है कि विराट कोहली अगर कैप्टन है और अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन है तो उन पे सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है बहुत दिनों से? यक्षित जी, 100% सवाल तो खड़ा होना ही चाहिए. जैसे पुजारा पे सवाल खड़ा हो रहा है, वैसे विराट कोहली पे भी सवाल खड़ा होना चाहिए, एंड अजिंक्य रहाणे भी के ऊपर भी सवाल होना चाहिए. जैसे आपने उनके इधर देखा, उनका कैप्टन था केन विलियमसन, उनके वजह से ही तो टीम जीता. उनका वाइस कैप्टन मुझे याद नहीं कौन है, फिर भी मेरे को लगता है कि जो रॉस टेलर इज अ वेरी सीनियर प्लेयर.
रॉस टेलर इज टॉम ने नॉट, हाँ, इवन फिर भी रॉस टेलर इज वेरी सीनियर प्लेयर. तो अजिंक्य रहाणे ऐसे बीइंग ए सीनियर प्लेयर ही शुड हैव टेकन अप द रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये एक चीज है. सेकेंड चीज, इसमें हम फिर ये भी नहीं कह सकते कि पुजारा का कुछ इसमें कसूर नहीं है. पुजारा को भी ब्लेम करना चाहिए. मेरा ये कहना है कि सबको ब्लेम करना चाहिए. बट आपने क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि इनको मतलब ज्यादा ये किया जाता है. अभी ऐसा है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन को थोड़ा ज्यादा मार्जिन मिलेगा टीम से बाहर निकलने के लिए एज कम्पेयर टू नॉन कैप्टन. तो अगर तीनों ने समझो अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो इसमें सबसे पहले स्केप कोट आपके पुजारा ही होंगे, फिर कैप्टन और वाइस कैप्टन पे बात आएगी. आयन जी. ओके, पर मेरे ख्याल से एक्सेट जी ये सही नहीं है. जो भी है आई थिंक परफॉर्मेंस काउंट होना चाहिए, चाहे वो कैप्टन हो, चाहे वाइस कैप्टन हो, चाहे कोई प्लेयर हो, सबकी बैटिंग परफॉर्मेंस पे काउंट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई कैप्टन हो या फिर वाइस कैप्टन हो तो वो इक्वल उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले कि वो बहुत ज्यादा दिन से आउट ऑफ फॉर्म भी रह सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये गलत है. आई थिंक यही मेरा बहुत दिन से इशू रहता है इंडियन टीम के साथ कि जैसे कोई टैलेंटेड प्लेयर होता है तो उसको कुछ ज्यादा ही खेलने का चांसेस मिल जाता है, और कोई उसमें होता टैलेंटेड नहीं होता शायद कोई प्लेयर और थोड़ा हार्ड वर्किंग रहता है तो उसको 2-3 चांसेस देके उसको हटा दिया जाता है. आई थिंक इट्स अ रॉन्ग थिंग वी आर डूइंग इन आवर क्रिकेट. ये नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली चांस मिलना चाहिए. मूविंग ऑन टू रुपेंद्र, गो अहेड यक्षित जी. अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, कैप्टन और वाइस कैप्टन तो हम पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से बनाते हैं ना. तो इस सभी स्पोर्ट्स में यही होता है कि कैप्टन वाइस कैप्टन पे जल्दी पहले टारगेट नहीं किया जाता है. तो उनका जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसी के बेस में फर्स्ट थिंग है इसकी दे शुड बी सच प्लेयर्स हु आर एश्योर्ड ऑफ देयर प्लेस. कैप्टन और वाइस कैप्टन ऐसे होते हैं कि जिसको मतलब जिनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकते कि ये प्लेइंग 11 में होंगे या ना होंगे. तो जैसा ही अपना जो आ रहा था ये जो डिकेड है इसमें विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ऐसा प्लेयर थे कि जिनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब जिनका जो पोजीशन है प्लेइंग 11 में उसके ऊपर कभी कोई सवाल नहीं रहा था. तो इसके लिए वो तो थोड़ा मार्जिन रहेगा ही कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऊपर, मतलब थोड़ा ज्यादा. बट ऐसा नहीं है, उनको भी मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा टाइम होने का अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो उनके ऊपर भी एक्शन उठाना ही चाहिए. यक्षित जी, मैंने आपका पॉइंट ले लिया, लेकिन अगर मुझे जितना याद आ रहा, अजिंक्य रहाणे भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले ना 1-2 साल उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डाउन हो गया था. इंडिया में छोड़े ओवरसीज में भी बहुत ज्यादा वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे. अचानक से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टार्ट हुआ जहां मेरे ख्याल से इंडिया पहला सीरीज वेस्ट इंडीज से खेल रही थी, वहीं से वो फॉर्म आना स्टार्ट हो गया उनका. ठीक है, मूविंग ऑन टू रुपेंद्र, आपका क्या पॉइंट है? कोई कैप्टन या वाइस कैप्टन रहता तो क्या उनको एक्स्ट्रा लायबिलिटी मिलनी चाहिए बुरे परफॉर्मेंस के बावजूद भी? नहीं, आई टोटली डिसएग्री ऑन दिस, क्योंकि आप टीम परफॉर्मेंस पे जाते हो. ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आप यानी कैप्टन और वाइस कैप्टन, आप ये तो आपकी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने टीम को जीतता है, राइट. तो यहाँ पे सबसे जो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कैप्टन और वाइस कैप्टन की आती है, ना कि प्लेयर की, क्योंकि प्लेयर तो भाई परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो प्लेयर आज ही फेलियर हो गया. ठीक है, और आप पुजारा की जहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बात अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली की होनी चाहिए, क्योंकि पुजारा जैसा बैट्समैन नंबर 3 का बैट्समैन आपके पूरी टीम में नहीं है कि जो आपका लाइक पूरी टीम को संभाल सके, राइट. ऐसा नहीं है कि भाई वो अभी ठीक है 4-5 इनिंग में वो फेलियर हो चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में काफी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, उसके बाद भी काफी अच्छे खेल रहे हैं, राइट. लेकिन अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली ये दो मेन जो बैट्समैन है, ये कंसर्न है टीम इंडिया के लिए. तो अजिंक्य रहाणे, और मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन मिलेगा शायद यहाँ पे लिवरेज मिल सकता है कैप्टन और वाइस कैप्टन को, लेकिन ऐसा मिलना होना नहीं चाहिए. और बड़ी बात कि जैसे अक्षय जी ने कहा कि शायद पुजारा को हटा सकते हैं और शायद कैप्टन और वाइस कैप्टन को थोड़ा चांस मिलेगा, लेकिन मैं तो इस बात से डिसएग्री करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चेतेश्वर पुजारा को टीम से आप हटा सकते हैं. ये चाहे यहाँ पे एक बात हो सकती है, शायद रहाणे को आपको लगेगा तो आपको प्लेइंग 11 में ना रखे और दूसरे प्लेयर को चांस दे सकते हैं, लाइक केएल राहुल और हनुमा विहारी जैसे ये दो जो बैट्समैन है, इनको चांस मिल सकता है. क्योंकि विराट कोहली थोड़ा फॉर्म में आने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर फॉर्म में नहीं आया तो शायद उनके ऊपर भी, क्योंकि इंग्लैंड का जो दौर है, अगर यहाँ पे वो परफॉर्म नहीं करे तो काफी बड़े क्वेश्चन मार्क होंगे विराट कोहली के ऊपर. विराट कोहली की कैप्टनसी के ऊपर तो है ही काफी से पहले सवाल है, लेकिन उनके परफॉर्मेंस के ऊपर एज ए प्लेयर उनके ऊपर काफी बड़ा सवाल उठने वाला है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शायद अजिंक्य रहाणे बेंच पे बैठे हुए दिखेंगे, उनके जगह पे शायद हनुमा विहारी और केएल राहुल ये दो प्लेयर खेलते हुए दिखेंगे. ओके रुपेंद्र, पॉइंट टेकन. मूविंग ऑन टू शोभन, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने तो बोल दिया ना, मतलब इसके बारे में आप पूछ रहे हो ना.
नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कैप्टन होने का फायदा और वाइस कैप्टन होने का फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि आई थिंक परफॉर्मेंस पे ज्यादा गौर करना चाहिए। अगर कोई प्लेयर अगर कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं है और वो ओवर उन्हीं के जितना टेस्ट मैचेस खेल चुका है, ओवर 80 टेस्ट मैचेस, तो क्या आप उनके प्लेस पे आप क्वेश्चन उठाओगे? uh, I will definitely give them a long rope if captain like if the captain is performing like I believe vice captain and captain are selected because of their past performances, the way they have I totally agree with Yaksit whatever he said, that it is based on performance, and captain and vice captain I think Pat Cummins is the vice captain, the test vice captain of Australia, because he has performed in the past. So I believe if Pat Cummins doesn't perform for the next 5 matches, then he will get a leverage. He will get the long rope because of his past performances. And I believe questions should be raised. I believe questions should be raised only when if Virat Kohli fails in this tour. But Ajinkya Rahane, again, I have seen Ajinkya Rahane performing overseas, but that consistent performance hasn't come yet. So I will definitely first target Ajinkya Rahane. What is he doing in the pressure situations? Most of the time he has collapsed, even though he scored plenty of runs. He scored against not plenty, but he definitely scored that magnificent 100 in the MCG. Also, he has scored runs in South Africa, or else India would have lost 3-0. So I believe questions should be raised of Ajinkya Rahane, and no question should be made of Pujara's place in the team. He is our best player. If Pujara gets dropped, then England and James Anderson, Stuart Broad, everybody will be doing like a cartwheel, because I believe, as Michael Vaughan said, when in 2005 Ashes, when Glenn McGrath got injured in the first test, he was playing football. Then the England team were doing cartwheels, they were partying. So I believe if Pujara gets dropped, then it's going to be a long night and a long day for Team India. Okay, moving on to the next topic, which is also related to Cheteshwar Pujara. I think everybody questions Cheteshwar Pujara about his strike rate. Okay, do you really think, Lucas, that we really can ask or we can question about the strike rate in Test cricket? Because the Test matches finishing in 3 days, 4 days, or even 5 days, and none of the Test matches are going for a draw. So, do you really think that we should talk about the strike rate in this era? Go ahead with that, Lucas. You have muted yourself. There you go. Well, thank you so him for bringing up the Glenn McGrath situation. You know, I've only heard that 500 times. You know, thank you for that. You know, we all know if he didn't, you know, roll his ankle, we would have won that series. You know, it's been 20 years since we won in England, but I don't need to be reminded of that. But thank you anyway. Now with Pujara, you know, I don't have I actually really admire Pujara as a cricketer and as a batsman, really. You know, I love how he goes about it. You know, he's a grinder, and that's what Test match cricket is about. It's about grinding. It's about testing yourself mentally, physically, and emotionally, and that's what Pujara does when he bats. He gets tested in all those three departments. You know, we saw, you know, in 2019, you know, we saw this year, you know, with Josh Hazlewood and Pat Cummins, you know, just, you know, going, you know, a million miles an hour at him, you know, ball after ball after ball, you know. That's what Pujara does. You know, he loves a challenge. You know, he loves to wear down the bowlers. You know, he makes them bowl to you. You know, you just sit there and just say, well, I'm just going to bowl these half volleys to him. You know, out wide. You know, he'll leave them all day. He makes you bowl those poor lines. You know, and only the very few best, you know, that can actually keep up with him, like a Hazlewood, like Cummins, do in the end actually get him. But, you know, there's other bowlers out there, you know, that they get tired, they drop short, and he punishes you with his cut shots. So, you know, I really admire that about Pujara's batting. You know, I don't think the way he plays should ever be questioned. And if they do, well, that's very disappointing. You know, a little bit embarrassing if they do question his style of play. You know, considering that, you know, he's that type of player. You know, he wants to be the wall. You know, no one's saying that he's better than Rohit Dravid. You know, no one's saying that, but you know, he just likes batting that way. And you know, I think we should all get off his back about the way he plays. You know, and just let him bat the way he wants to bat.
यक्षित जी आप बताइए क्या ये सही है? स्ट्राइक रेट के बारे में आजकल के टाइम में रियली बात होना चाहिए, जब टेस्ट मैच ही 3 दिन में खत्म हो जा रहा है, 3 दिन 4 दिन में, तो क्या स्ट्राइक रेट के बारे में रियली बात करना चाहिए यक्षित जी? हेलो। हाँ, तो आई विल गिव माय आंसर इन इंग्लिश बिकॉज व्यूअर्स को लगता है कि इंग्लिश, बहुत सारे व्यूअर्स है जिनको इंग्लिश समझ में आ जाएगी। हेलो, सुन रहे हैं मेरा आवाज? जी हेलो जी, आई थिंक कुछ इंटरनेट कनेक्शन हेलो हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा, आपकी वीडियो फ्रीज हो चुकी है यक्षित जी। हेलो। जी आवाज आ रही है आपकी, पर वीडियो फ्रीज हो चुका है, आप बोलते रहिए। एक मिनट, मैं वापस आता हूँ। ओके, शोभन। Look, we are discussing about strike rate only यस because of T20, because of the advent of T20 cricket. In this era, we are discussing about strike rate. If we go previous generation in 2010 or in 2000, 1990s, there were never a concern about your strike rate. Only because in our lifestyle, we are in 21st century. Everything is fast paced. Everything is like running quick. That's why we feel the wind is blowing faster. I believe that's why we are talking about strike rate. But if we look at Pujara, he's one of those batsmen, rare batsmen. It's like a space, like these type of batsmen come very rarely in this form. I mean, in this day and age, because I have seen Kane, Pujara. These are like the tigers. Those tigers, like white tigers, those who are extincting. They are not even present in the earth anymore. So we need to keep them secure because they are a rare breed. And talking about Lucas, I was listening to him very vividly, and he said very good points. He is a batsman who forces the bowlers to bowl bad deliveries. He doesn't make things happen, but he waits for things to happen for him. So I believe that's a rare quality, and we have listened to a lot of experts, a lot of ex-cricketers. Adam Gilchrist is a big fan of Cheteshwar Pujara because he is a batsman that's dogs in. He doesn't give it away. He leaves and leaves and leaves. He's like a Steve Smith. If you look at Steve Smith in the 2018 Ashes, he literally won the game for Australia in 2019 Ashes. He literally won the game for Australia, and he was just leaving and leaving and leaving. And every expert, every commentator, every radio commentator from England, they were bored and they were like, "Oh my God, how are we going to get him out?" So that's the thing with Pujara. I believe strike rates shouldn't be a concern. I guess Pujara was dropped for the very first time in the West Indies, where when his strike rate was, I guess, was very very low. But after that, there should be no discussion about the strike rate because strike rate is very overrated in Test cricket. You shouldn't be. You just have to tick. You just have to score off the bad deliveries. If we look at Kane Williamson, what an innings! I guess he was 25 not out, facing 150 deliveries, and that innings actually saved New Zealand from a defeat and ensured that they have their noses in front every time they step onto the field. So Pujara, for me, there should never be a discussion about his strike rate, and I believe strike rate is overrated in Test match cricket. यक्षित जी, ये सवाल है अमर जी का, आपको इसका भी जवाब देना होगा। और जो जो टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट की बात होती है, खासकर पुजारा के मैटर में, क्या वो सही है या नहीं, आपको इसका जवाब देना है। एक्चुअली मेरा इसमें मिक्स्ड आंसर है। देयर आर टू सिचुएशंस। ओके, मोस्टली क्या होता है कि बॉल जब स्विंग कर रहा होता है तब बैट्समैन को क्या होता है कि बॉल को यूना करना होता है। ही हैज टू मेक द बॉल ओल्ड। At that point of time, there is not any matter of any concern regarding the slow strike rate. Also, we saw the situation of the third test match in Australia. In that situation also, strike rate is not a concern. But if a player like Pujara, if he's played already 200 to 250 balls, then we have to start scoring. Even Rahul Dravid, आपने देखा रहेगा फर्स्ट 100 बॉल में उनका स्ट्राइक रेट 30 होगा, बट उन्होंने जब 250 240 सब बनाया है, उनका स्ट्राइक रेट अप्रोक्सीमेटली 50 51 55 के ऊपर। ये मेरा ये कहना है कि अल्टीमेटली कि अगर स्विंगिंग कंडीशंस होगा, जिस कंडीशंस मतलब कंडीशंस में आपको बॉल जोना करना होगा, जहाँ पे स्टे करना कंपलसरी होगा, तो वहां पे स्ट्राइक रेट एक मतलब कंसर्न नहीं करता है। बट अल्टीमेटली मैच जीतने के लिए, फॉर एग्जांपल, अपने सब बैट्समैन अगर वैसे ही खेलने लगे पुजारा को, तो रन्स नहीं बनेंगे। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इफ बैट्समैन इज सेट, he has played 150 200 balls, then he had to start scoring with a higher strike rate
to win the test match. तो मेरा यही कहना है गौरव जी. और ये जो सवाल है अमर जी ने जो पूछा है, he is filling the boots of the ever great Rahul Dravid. Is this the reason behind people expectation over Pujara is too high? Many a times he has done so. उन्होंने द्रविड़ का रोल प्ले किया है और हमने भी अप्रिशिएट किया है कि हमारे को राहुल द्रविड़ के लिए परफेक्ट रिप्लेसमेंट मिला है. तो फिर एक्चुअली उन्होंने अभी तक इतना परफॉर्मेंसेस है, भले बीच बीच में थोड़ा परफॉर्मेंस नहीं आया है, बट अल्टीमेटली इट इज अ गेम, सो वी विल सी अप्स एंड डाउन. तो उन्होंने, मेरे को लगता है कि वो अपना जो रोल है वो सही तरह से अदा किया. Okay, moving on to Lucas. Lucas, you have one question. You need to answer this. I will translate it in English. Cheteshwar Pujara has been getting out on the same pattern. So why will not everybody question his place in the team? Yeah, when you bat that way, you block balls and you leave balls. Sometimes your feet will not move when you actually play shots. And the dismissals we see, him fishing outside off stump, his feet hardly move. He doesn't get in front of the ball, so in front of the line of the ball, and he gets nicked to the slips. Remember Pujara used to have an LBW problem, but recently now he's getting out a lot in the slips. He's nicking balls, against Hazelwood, most of his deliveries were to Tim Payne or to the slips. But, in that Brisbane innings, Pujara still played that way. He still played that defensive way. He still read down the bowlers. Well, you had Shubman Gill and Richard Punt, playing aggressive cricket. And, and Pujara was one of those major contributors that won them the test match because he read down those bowlers. At the end of those test matches, Hazelwood, Cummins and Stark were all tired. They were all out on their legs because, they were bowling the same deliveries to Pujara and he was keeping them out. So, strike rate, as the last person said, is overrated. This is just another, T20 thing, that's came into Test cricket, and it has no place. It has no place in it. Personally, I don't care if you're 1 off 100. As long as you make runs. As long as you contribute to your team. And Pujara the last couple of innings has not done that. But like I said, he wasn't terrible in Australia this year. It wasn't like he was making ducks every single innings. Yes, he was getting out to Cummins a lot in the same shot in Hazelwood, fishing outside off stump. But when you play like that way for so long, you don't move your feet. And he had that problem of not moving his feet, and we saw that in the against New Zealand. Again, he did not move his feet, and he nicked to a ball. And when he got out, Pujara, he hardly makes any facial expressions. When he got out, he was really disappointed with himself. So that just tells me, that's a concentration thing. Because he never reacts to getting out. He kind of just walks off. But that really affected him. And so it's also concentration. But like I said, Pujara, he's one innings away. He's one innings away from like saying, what, hey, I'm not going anywhere. I'm still going to be here. And if you're going to get rid of me, well, come at me. And I'll still be here. So that's the way it is. ओके, थैंक यू लुकस. मूविंग ऑन टू शोभन. शोभन, एक सवाल है मेरा आपसे. हमारे पास बैकअप ऑप्शन क्या है? चलिए मैं मान लेता हूं कि पुजारा या फिर विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे लंबे वक्त तक और खेलते रहे, 3 4 5 साल तक. लेकिन अगर फॉर दैट मैटर किसी दिन कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, पुजारा अगर हो गया या विराट कोहली हो गया या अजिंक्य रहाणे, तो हमारे पास बैकअप ऑप्शन क्या है, खासकर नंबर 3 पे? शोभन. वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर हम देखें, number 3 is a very crucial position. Whoever comes to bat, it's a make or a break situation for every player. So I wouldn't play a rookie in. I wouldn't play a young player who is just coming up the ranks. Straight away throw him into number 3. And if you're talking precisely about the England series, तो फिर मैं I will choose with I will just tinker the batting lineup. I may play
may play somebody like Vihari in place of at number 3, but I wouldn't bring anyone. We have at this point in time, I believe KL Rahul. Even if you throw in KL Rahul at number 3, he's going to flop. I want someone to replace Pujara, being a Pujara, kind of a Pujara mold batsman who can play very defensively and just kill the game, just slow down everything, like everything should be slow and there is no rush. So I believe Vihari can be someone who can be trusted with number 3. He has opened the innings, even though he will not be comfortable in the first innings, but he will look at home in the second innings. So another like we again Pujara, like you were talking about a lot about Pujara, but I believe Pujara का अगर हम टेस्ट मैच रिकॉर्ड देखें, 86 मैचेस 46 एवरेज and he has scored 6,287 runs with a strike rate of 44 and 3 200s. मतलब इसका मतलब है बड़े बड़े मतलब 203 मार चुके हैं और 118. So this means this player is a like high class cricketer. We are talking about him only because we are blessed with batting talent. We are talking about and I believe Pujara is someone who can play for New Zealand, who can play for Australia. Australia will definitely, if you ask Lucas, he will say, okay, if you don't want, give it to me, because he is kind of someone who will definitely walk into any international 11. And talking about Australia, I guess in the past we have seen players like Chris Rogers. There was someone who could just kill the game. There was Chris Rogers and there were Phil Jacks, and even though he didn't succeed more, but there were a lot of cricketers like Justin Langer. They were tremendous players of defending the ball. Amidst them, there were power hitters like Gilchrist, Hayden. So it should be a mixed and match. We have two stroke makers. For two stroke makers at the top, Shubman Gill, Mayank Agarwal and Rohit Sharma. In between, you need that Pujara, or else your batting will just fade away. You need that solidity at number 3, 4, 5, 6 are all stroke makers. Rishabh Pant is someone coming at number 6. He needs that time. That's why Pujara got out, and it was a big hole only because of Pujara. If Pujara and Kohli would have played that, अगर वो खेल लेते वो बीच का innings, तो बहुत मतलब I believe कि India favorites रहता. तो आपके मतलब मेरे हिसाब से आप जिसे बोल रहे हो कि कौन रिप्लेस कर सकता है, I feel it will be हनुमा विहारी. यक्षित जी. अच्छा शोभन जी ने तो बहुत अच्छी तरह से इम्पोर्टेंस बताया पुजारे की तरफ एग्जांपल देके. मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा. आप अगर पुजारा को निकलते हो तो इससे एक तो अपने पास प्लेयर नहीं है जो कंफर्टेबल इसमें सिट करेगा, और अगर है भी तो वो अपने को बैटिंग ऑर्डर चेंज करना पड़ रहा है, तो इससे उनका इम्पोर्टेंस पता चल रहा है. एक चीज और देखो, अगर पुजारा आपने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा कि अगर पुजारा चले गए तो उनके जगह पे कौन होगा. मेरे को ऐसा लगता है एक प्लेयर ऐसा है, व्यूअर्स एग्री करेंगे क्या पता नहीं, बिकॉज देयर आर टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव समवन चांस इन मिडिल ऑर्डर, लाइक आपके मयंक अग्रवाल हो गए या फिर मयंक अग्रवाल तो अपने केएल राहुल और वाशिंगटन सुंदर पीछे बैठे हैं मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए. तो मेरे को ऐसा लगता है अजिंक्य रहाणे को हम नंबर 3 में खिला सकते हैं, बिकॉज अजिंक्य रहाणे कैन मतलब वो जो डिफेंसिव उनका जो ये है, अगर वो मतलब उनसे हम डिफेंसिव खेल चाहेंगे वो डिफेंसिव भी खेल सकते हैं, वो अटैकिंग चाहेंगे तो अटैकिंग भी खेल सकते हैं इफ सिचुएशन कम्स. हाँ, तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि अजिंक्य रहाणे कैन प्ले एट नंबर 3 एंड अजिंक्य रहाणे की जगह पे हम केएल राहुल, हनुमा विहारी या फिर वाशिंगटन सुंदर को जगह दे सकते हैं. तो इससे टीम बैलेंस जो है थोड़ा सही हो जाएगा, बिकॉज अजिंक्य रहाणे कैन ब्लॉक एंड प्ले. तो क्योंकि उनका जो आप लिमिटेड ओवर में भी देखोगे तो टॉप ऑर्डर के उनको एक्सपीरियंस है, रणजी में भी उनको टॉप ऑर्डर का एक्सपीरियंस है. इसके लिए मैं अजिंक्य रहाणे के बस थोड़ा सा मतलब मैं नहीं चाहता ऐसा हो जाए, फिर भी ऑप्शन जो है टीम के लिए बेटर ऑप्शन मेरे को ये लगता है. लेकिन यक्षित जी एक बात बताइए मुझे, नंबर 5 पे जब वो बैटिंग कर रहे हैं फिर भी सिचुएशन काफी आसान हो जाता, गेंद काफी पुराना हो जाता. मैं टैलेंट पे नहीं जा रहा हूं, मुझे किसी की एबिलिटी पे भी मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं कि नंबर 5 पे बैटिंग करना, नंबर 5 नंबर 6 पे जो बैट्समैन होता है उनके लिए टेस्ट क्रिकेट में अगर आप पूछोगे तो फिर भी थोड़ा बैटिंग करना आसान हो जाता है कंपेयर टू बीइंग एन ओपनर या फिर नंबर 3 पे बैट्समैन जो होता है.
ठीक है, जब नंबर 5 पे भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, जिस हिसाब से उनका रेपुटेशन है अजिंक्य रहाणे का, जिस तरीके का वो प्लेयर है, आई थिंक अभी भी अगर आप कोई किसी से पूछोगे तो वही बोलेंगे अपने रेपुटेशन पे, उन्होंने अपने रेपुटेशन से अपने जिस हिसाब से वो प्लेयर है उस हिसाब से उन्होंने जस्टिस नहीं किया अपने टैलेंट के साथ। तो मेरा यही सवाल है कि जब 5 नंबर पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 3 नंबर पे मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग चेतेश्वर पुजारा जब ड्रॉप हुए थे तो वो श्रीलंका वाले सीरीज में खेले थे, तो वहां पर भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। मेन प्रॉब्लम अजिंक्य रहाणे के साथ वही है, जब वो कंसिस्टेंसी नहीं है उनके साथ, तो क्या वो नंबर 3 पे भी अच्छे साबित हो सकते हैं आपके टीम के लिए? I don't know, but as far as England series is concerned, इंग्लैंड में थोड़ा उनका रिकॉर्ड जो है अजिंक्य रहाणे का एज कम्पेयर टू अदर्स इज लिटिल बिट बेटर। लॉर्ड्स में उनके पास सेंचुरी है, बाकी कोई भी आप ये 6 बैट्समैन देखोगे, लॉर्ड्स में कोई सेंचुरी नहीं है। लास्ट टाइम तो द्रविड़ और वेंगसरकर का मुझे याद है और अजीत अगरकर का ये मुझे याद है। लॉर्ड्स में उनका सेंचुरी है और थोड़ा इंग्लैंड में थोड़ा एज कम्पेयर टू अदर्स प्लेयर्स थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस है। बट मैं यही आपको फर्स्ट डिस्क्लेमर दे दिया था कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, बट मैं टीम बैलेंस को देख के, बिकॉज दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है अजिंक्य रहाणे को नीचे खेलाओ, बिहारी को ऊपर खेलाओ, बट मैं टीम बैलेंस को देख के, बिकॉज कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि अपने को स्ट्राइकर बैट्स मतलब अजिंक्य रहाणे से हम स्ट्राइक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो वैसा स्लो भी खेल सकता है। तो इसके लिए मैं ये था कि एज टीम बैलेंस के हिसाब से मैं बोला कि अजिंक्य रहाणे का ऊपर खेला और एक चांस मिडिल ऑर्डर में किसी नया बैट्समैन को दे सकती हूँ, बिकॉज उनका पास्ट एक्सपीरियंस भी है रणजी का। मैं 2-3 बेसिस के साथ मैंने बोला और कुछ नहीं। ओके यक्षित जी, पॉइंट टेकन। मेरा इस पे ये पॉइंट है, अगर मुझे अगर कोई ऑप्शन अगर मेरे लिए है तो मैं शुभमन गिल को नंबर 3 पे ट्राई करूंगा और मयंक अग्रवाल को मैं ओपनिंग करवा दूंगा। दैट लुक्स थोड़ा सा सेटल बैटिंग यूनिट लगेगा, क्योंकि शुभमन गिल ओपनर ही है और नंबर 3 टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग करना और ओपनिंग करना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आई वुड प्रेफर शुभमन गिल टू बैट एट नंबर 3 एंड आई विल पुट मयंक अग्रवाल इन द टॉप ऑफ द ऑर्डर। मूविंग ऑन टू द Lucas, final question I want to ask with you. What are the option you have once for that matter? Suppose Cheteshwar Pujara get injured in England or for any series, what are the option you have? Which batsman you think who can bat at number 3 in this Indian team? Go ahead with that. It's a very tough question because Pujara has made that his spot for a lot of years, and and since he's been playing in that Test team, no one has ever really batted 3. Maybe Kohli can bat 3. I don't see Rahane moving up to 3. Because he bats right pretty much down the lower order. You might have to look at domestically. KL, he was tried. He got found out in England. He had a bad series there. But maybe domestically, is there a number 3 batsman domestically, that plays like Pujara or has an average of like 50, 60 that can fit into that position? So no. Okay, so then you better hope that Pujara's around a long time making a lot of runs, because Australia, they had the same problem with Nathan Lyon. With when Shane Warne retired, we used 15 different spinners. We had no one to and most of them only played one Test match. So you don't really want to see such a crucial batting position go down that path. Because the number 3 is probably the most important batting position in the lineup. And if you've got no one in domestically, and you've got players that have never played at number 3 before, because Pujara has made that spot for a lot of years, then the task becomes almost very, very tough to put into that position. But in my opinion, I think maybe Kohli would be the next best thing. But I wouldn't go with KL and I wouldn't go with Rahane. I'll keep where they are. But if I'm Indian cricket, I'm hoping Pujara stays around for a long time until a domestic batsman number 3 can come up the ranks.
Thank you, guys. It's time to wrap the show. Thank you for the time. I hope you have enjoyed the conversation and today's topic. Thank you for And the what time. time It was is it, lovely chatting with you guys. Lucas? What time is it? 2:50 a.m. Oh my! Okay. Oh my God! Have some Lucas was dedication. working in, you won't believe it, guys. Lucas was working in Sunday. Oh, Lucas, you are working, right? Oh, okay. Working. Okay. But Okay, thank you for the time, guys. sitting on a chair doing nothing. You know that? Yeah, working. Yeah, paperwork. Yeah. Okay. But no, Okay, guys, thank you for I do like coming on here and talking to you guys and expressing my opinions and hearing your Wow. opinions. So you know, Pleasure. I always appreciate that. Pleasure, Thank mate. you for the time, Pleasure. guys. It was lovely chatting with you. It's time to wrap the show. Thank you guys for coming to my show. वीडियो पसंद आया guys तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं. देख रहे हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं करें तो बेल आइकन सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं. और इंस्टाग्राम ट्विटर पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं. गौरव यान के नाम से ही हूँ दोनों जगह पे. तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का भी ध्यान रखें. तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि. थैंक यू गाइस. Thank you. Thank you.